Hello, viewers. Good evening. Welcome to this 23rd session of Commodities Insights, Trends and Forecasts. Last week, that is last Thursday, हम basics of commodity derivatives के ऊपर webinar run किए थे. And we covered all the basic topics: how trading at ICICI Direct happens, what is the background of commodity derivatives, what is the product, what are the commodities traded, what are the product specifications. So जैसे हम every session में mention करते हैं, please do continue joining the commodity webinars every Thursday at 4 p.m. At ICICI Direct. So this Thursday and the next two Thursdays, we'll be having this Insights, Trends and Forecast session, and today is the 23rd episode of this session. So without further delay, let's enter into the session. As usual, हम इस session में last 2 weeks जो भी commodity markets के ऊपर whatever major news and developments है with respect to the global commodity markets, will be discussing that. उसके बाद जो भी price trends, current price trends है and different major commodities that we are trading in India, वो भी discuss करेंगे. And forecast for the next week, क्या क्या data हमको expect करना चाहिए आगे, वो भी हम cover करेंगे. So these sessions, this Insights, Trends and Forecast is primarily focused on the news and developments that backs the commodity market basically, so that whatever news and developments which are impacting the price movements, you will be able to understand. So fundamental समझे, technical समझे, उसके ऊपर based on this, do better trading, take informed decisions while trading in the commodities market. वही purpose है हमारा, इसलिए हम ये sessions conduct कर रहे हैं. And I am Arvind. I'm product manager for commodity derivatives at ICICI Direct. And my co-host is Anup Sahu, who is the research analyst for commodity derivatives at ICICI Direct. So जो भी ICICI Direct के research recommendations, research reports आप सब check करते हो, that is primarily from Anup Sahu's work. So going ahead, so आज के session में, as usual, we know that tariff situations scenarios have been going on since the month of January after Trump assumed office. But however, some major news for this last 2 weeks, if we look at, the first thing is there are some easing uncertainties that have been previously supporting gold. So last few months, we have been trading, we have been seeing all-time highs in gold prices and the silver prices as well. So as high as $3,400 भी देख रहे थे, close to 1 lakh rupees for 10 grams Indian prices में देख रहे थे. So this scenarios we have been seeing in gold hitting all-time highs. But recent developments is that there have been some easing uncertainties. That is, क्या क्या है easing? मतलब the geopolitical tensions, that is Russia-Ukraine war जो चल रहा था, there have been some ceasefire talks, there have been improvements. There have not been major advancements in that point, in this particular point, this is the Russia-Ukraine tensions. That is one thing which has been easing down. The other thing, the Israel-Iran war that was happening recently, that has been coming down as well. There have been ceasefire talks for a few days. So the major geopolitical tensions जो हो रहे थे जिसके वजह से safe haven demand आ रहा था gold के ऊपर, that has been coming down. That's the one major point. And then there has been increased expectations of rate cuts from Fed. So though US economic data is not as good still, but still पहले से भी जो जितना overheating हो रहा था उतना तो अभी नहीं हो रहा है. The economic data have been coming better than expected. That is one major thing. So uske wajah se there is an rising expectation on the rate cuts from Fed. So इसी साल में, in this calendar year, by the end of 2025, we are expecting at least 2, but from our end 2 नहीं तो अगर 1 तो आ जाएगा इस साल में, so that's what we have been expecting. So there can be definitely some rate cuts also. So उसके अलावा the gold ETF inflows भी अभी slow down हो गए. In the last month, in the sessions in the last month, we have been discussing कि gold ETFs में कितना inflows बढ़ रहा है all over the world, not just in India, in the major economies as well, the other major economies as well. So gold ETF inflows पहले ज़्यादा हो रहा था, but that has been coming down now. And people are going towards more riskier assets. Like equity markets are strengthening in the US, in Europe, the other major economies as well as in India. So there has been growing interest towards the riskier assets as well. So in general, जो भी uncertainties थे वो कम हो गए gold में, that they are coming down, they are easing down.
People are moving towards riskier assets. And with that, the ICICI Direct's research team has also come out with a special report recently saying that gold might come down to 90,500 rupees per 10 grams in the Indian markets as well by the end of August. So ये मैं एक बार report भी दिखा देता हूँ कि what our research report says. So the commodity insight is that. So this report came out on June 27th, asking to sell and risk gold mini for target of 90,500. So Anup Sahu with me, he had also worked on this report. So Anup, over to you. आप क्या बोलना चाहेंगे on 90,500 target for gold? I think as we have already discussed on gold, but the safe haven demand has been eased, but still the uncertainties on related to trade, trade tariffs and all that is still there. So that's why we haven't seen that kind of correction. But if you'll see 30 to 50 in spot gold and on the upside 3400 or even 3450. This is the broad range since last 15 or 20 days we have been observing. After 3 weeks or fourth week of decline, we saw a good recovery in gold prices because of all these US tariffs and all that. But broadly speaking, I would not say like the rally we can expect beyond 3500 this time. We are expecting a bit correction. See, the gold this year has almost rallied near around 26-27% in the international as well as in domestic markets. So some profit booking may come and maybe some correction. That's why we are saying profit booking or correction. Yes, but 30 to 50 is the level that we are eyeing for the timing. If it breaks 30 to 50, then again 3200 or even 3150 till max till that point we are expecting. So this is for why we are expecting that correction, because uh, as we know that US job numbers are still good, and the Fed members, the recent FOMC meeting that we saw also, most of the Fed members are in a view that they are not in a hurry to go for rate cuts at this point of time. They just want to wait for some time to get more clarity on the inflation front, because that is the major concern right now. If inflation stays above their target level, then they will wait and watch. And the recent tariffs, how does that tariffs will impact prices? So ये सब होने उसकी वजह से है, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो फेड के तरफ से जो रेट कट का जो चांसेस है इमीडिएट नहीं है. लाइक जुलाई में जो उनका पॉलिसी होगा दैट विल बी like more than 90% chances are there they are not going to cut the rates in July. So if they hold the rates in July and they sound again hawkish, then prices will definitely come down. Yes, चांसेस जो है सितंबर और दिसंबर में रेट कट का दैट इज स्टिल देयर. अभी आप देखेंगे तो सितंबर का रेट कट का ऑलमोस्ट नियर अराउंड 70% चांसेस है सितंबर में कट होने का. ओके, सो डेटा डिपेंडेंट है, सो दैट हैव टू लुक. दे आर मोस्टली आइंग बिकॉज दे आर सेइंग जॉब नंबर्स आर गुड. आप लास्ट टाइम भी देखा रहेगा आपने. सो नियर अराउंड 1,45,000 के आसपास जो यूएस के जॉब नंबर्स में जो इंक्रीज हुआ है दैट हैज बीन देयर. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज नो वरी. सो ओनली कंसर्न इज इन्फ्लेशन. हम नेक्स्ट वीक में यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स देखेंगे. ओके, सो हमने जो कोर सीपी इन्फ्लेशन नंबर्स देखे थे लास्ट मंथ, उसमें इट इज नियर अराउंड 2.4% के आसपास, जो कि ऑलमोस्ट देयर. ओके, जो कि थोड़ा कुछ मार्जिनल चेंजेस हुए थे. सो दैट्स व्हाई we don't see के मेजर कुछ तेजी हो जाएगी गोल्ड में. एंड वी आर एक्सपेक्ट ओनली वन थिंग इज दैट if there is any further geopolitical issues, okay, that is the thing, we can keep it as a जो कि गोल्ड को सपोर्ट कर सकता है. So, yes sir, yeah. Vanita, usually when Fed brings down rates, it would be supportive for gold, correct? Yes. But also Fed कब rate कम करेगा when the economy is doing good.
So when the economy is doing good, that means gold का जो safe haven demand है वो भी कम हो जाएगा. So the fundamentals are suggesting that gold might come down, but at the same time, Fed would decrease rates, which would be supportive for gold. So how does this Fed rate cut actually impact gold prices? See, Fed rate cut comes when they are feeling that if the economy is not doing good, they need some liquidity pushed into the market. So that is the point they come with rate cut. But here what happens? The economy is not that bad. The job market is still good. Okay, only we saw the GDP numbers जो कि लास्ट क्वार्टर हमने आई थिंक ये जो फर्स्ट क्वार्टर बोल सकते हैं 2025 का जो फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी नंबर्स आए थे दैट वाज बिलो एक्सपेक्टेशन इवन कॉन्ट्रैक्शन हुआ था जो कि इट वाज ऑलवेज एक्सपेक्टेड बिकॉज जो ट्रांजिशन फेज था लाइक यूएस इलेक्शन के बाद ओके फर्स्ट क्वार्टर था डोनाल्ड ट्रम्प व्हेन ही take the charges so that period is there so everybody was expecting के जो first quarter वो खराब रहेगा so it has been there but other numbers are not ऐसा कुछ discouraging नहीं है so that's why we see like अगर Fed ये सब को consider करते हैं and खास करके inflation को अगर if they want take consider so they will not reduce the rates in July एंड रिड्यूस अगर रेट कट नहीं होता है तो यूएस के जो ट्रेजरी यील्ड्स ऊपर अभी जैसे आपने देखा रहेगा कुछ दिनों में अच्छा खासा रिकवरी हुई है ओके सेकंड थिंग अगर आप देखे रहेंगे तो डॉलर भी ऑलमोस्ट 2-3 महीने लो के आसपास से फिर से थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है ओके सो ये सब की वजह से अगर डॉलर रिकवरी होती है और दूसरा एक चीज अगर ट्रेड डील्स हो जाती है कुछ मेजर इकोनॉमीज के यूएस के साथ अगर ट्रेड डील्स हो जाती है देन दैट विल बी आल्सो पॉजिटिव फॉर डॉलर अगर वैसा पॉजिटिविटी आती है तो देन अगेन अगर डॉलर इंप्रूव होता है डॉलर में स्ट्रेंथ आती है तो डेफिनेटली गोल्ड में फिर से करेक्शन आना चाहिए राइट राइट ठीक है पैरेलली आप गोल्ड एंड सिल्वर चार्ट्स भी एक बार दिखा देंगे विल डिस्कस द प्राइस लेवल्स या यस आप देखिए ये है गोल्ड का जो इंटरनेशनल चार्ट है spot chart hai you can see that it is clearly since last even 1 or 2 months it is in that range आप देखिए 30 to 50 जो है it is still holding 30 to 50 and ऊपर के लेवल से 3450 3460 के लेवल से again ये मैंने एक ट्रेंड लाइन पहले का ड्रॉ किया है सो आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही है पिछला टाइम यहाँ से सपोर्ट लेके 3245 के आसपास से घूम गया था अभी कल भी ये 32 समथिंग अराउंड 70-75 के आसपास से फिर से सपोर्ट लिया है सो मे बी थोड़ा बहुत रिकवरी आए बट आई डोंट थिंक सो ये जो 3450 के ऊपर के लेवल से इसके ऊपर ये इतना इजीली टेक ओवर करके या तेजी हो जाएगा हम यही रेंज देखना वी आर एक्सपेक्टिंग 50 to 3400 ये जो रेंज है आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर नेक्स्ट 1 or 2 weeks बिकॉज ये मंथ एंड में एफओएमसी मीटिंग है सो टिल दैट टाइम आई डोंट सी मेजर broad change of range so I am expecting more of a consolidation range अगर 3250 ब्रेक होता है तो आपको 3200 या फिर 3150 दिखेगा बट ये सिनेरियो कब आएगा when there will be पॉजिटिव आउटकम फ्रॉम द ट्रेड सिनेरियोस जो कि ट्रेड डील्स को लेके मैं बोल रहा हूँ उसको लेके कुछ अगर पॉजिटिव आउटकम आती है देन डेफिनेटली हायर चांसेस दैट वी विल सी करेक्शन ये तो इंटरनेशनल गोल्ड का हो गया आप डोमेस्टिक का भी एक बार देख लीजिए या यस ये आप देखिए दिस इज जो फर्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट है इसमें भी आप देख सकते हैं 95,000 के आसपास से आके लास्ट वीक में हमने देखा था रिकवरी हुई है ओके तो सेम वे इट इज देखा जाए तो ट्रेंड इज स्टिल पॉजिटिव ओके सो ट्रेंड पॉइंट ऑफ व्यू there is no doubt in that कि we are in a still bull trend में अभी भी है ओके सो आप अगर देखेंगे ये टाइम
मैं आपको वही बोलूंगा, डोमेस्टिक प्राइसेस में 94,000 आप नीचे में रखिए, फिलहाल के लिए एक सपोर्ट है। अगर 94,000 ब्रेक होता है तो हम वो 91,000 या 90,500 देखेंगे। ऊपर के लेवल लगभग वही इमीडिएट तो 98,500 के आसपास है एक इनिशियल रेजिस्टेंस। अगर हम शॉर्ट टर्म का बात करेंगे यानी एक हफ्ते का बात करेंगे, 98,500 इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर चलेगा तो आपको थोड़ा बहुत लाइक 99,200 400 ऐसे लेवल्स दिखेंगे। अदरवाइज वेरी शॉर्ट टर्म रेंज 98,400 से लेके 94,800 या फिर आप 95,000, ये छोटा रेंज आप मान के चलिए। Okay. But however, the 90,500 हमने स्पेशल रिपोर्ट में दिया, that was for August expiry contract gold mini का, correct? So towards end of August. यस। ठीक है, उस रिपोर्ट का लिंक will also be given in the description below. आप viewers can go ahead and check the entire report over there. And how about silver price levels, Anup? जस्ट यस, सिल्वर हमने लास्ट मंथ में अच्छा खासा रैली देखा था। ओके, बट अगेन इट आल्सो गॉट स्टक। सेम जो आप इंटरनेशनल देखेंगे तो 37 40 30 या 40 के आसपास एक बार हिट हुआ एंड अगेन इट गॉट रिमेन्ड इन द रेंज 34 35 के आसपास से। अब देखिए इस कपल ऑफ ओकेजन्स इट हैज hit and it tried to make new highs, but again it failed. So same kind of a situation here also. Breakout level was near around $35, जो कि 3480 हमने बात किया था, and on the higher side 3735 3740, this is the higher end of the range. So broad same consolidation pattern. Okay, so but the trend here is positive. Why I'm saying, because silver has given a multi-year breakout, जो कि 12 13 years का जो range था वो breakout है। Okay, so I would say as long as it holds above $35, even 3480, ऐसे अगर if you consider marginal levels 3480, so then I would say as long as that holds, we are still expecting a bullish scenario or bullish price action। 3740 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो हम इसमें अच्छा खासा तेजी देखेंगे। ओके, अभी आप देखिए देयर आर वेरियस पैटर्न्स। कोई ये जो पूरा कंसोलिडेशन था, पूरा रेंज ब्रेकआउट हुआ है, सो टेक्निकली इट इज वेरी साउंड, and on the fundamental point of view also, as we know that since last 3 or 4 years it is in a deficit। okay, जैसे जैसे इसका यूज, इंडस्ट्रियल यूज बढ़ता जा रहा है, so that is whole about like you can say that it all brings positivity in price action। ओनली पॉइंट ये है, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू चाइना के इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर इम्प्रूव होती है एंड कुछ भी न्यूज पॉजिटिव आती है, ओके, सो सिल्वर को पॉजिटिव रहेगा। अगर ट्रेड डील्स में भी पॉजिटिव आती है तो डेफिनेटली इट विल बी positive for prices, and that's why I'm expecting silver will outperform in gold। okay, in the coming days silver will outperform gold prices। ये तो है इंटरनेशनल प्राइसेस। आप इफ यू वांट टू बाय, किसी को बाय करना है तो नियर अराउंड $35 के आसपास आएगा तो आप बाय कर सकते हैं। उसके नीचे का $35 के नीचे का स्टॉप रखिएगा। आप चाहे तो थोड़ा बहुत नीचे लाइक 3440 ऐसा स्टॉप रख के आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। बट यस, 3740 के लेवल क्रॉस होने के बाद हम 3850 या फिर $39 भी देख सकते हैं। सो तो जो रैली हुआ है अभी आप देखिए यहाँ पे भी ये लेवल था 3480 का, 2 बार इसने इट रेजिस्टेंस लिया, बट थर्ड टाइम देयर इज अ ब्रेकआउट। ओके, सो सिमिलर काइंड ऑफ अ थिंग मैं हैपन यहाँ पे, एक बार 2 बार हो गया, थर्ड टाइम जब ब्रेक होगा तो हायर चांसेस दैट इट विल गो अप। Okay. हम How about MCX डोमेस्टिक, prices? यस, डोमेस्टिक प्राइसेस एक बार देख लेते हैं। हाँ, यस, 1,10,000 या 1,11,000 के आसपास कुछ यहाँ पे भी हाई थे। ओके, सो सेम आई वुड से सेम लेवल्स, 1,10,000 11,000 का ऊपर का लेवल। ओके, और ऑन द डाउन साइड 1,03,000 या फिर 1,02,000।
ओके, ये सब नीचे के लेवल्स मेरे हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स रहेंगे। सो जब तक 1,01,000 के ऊपर है, टिल दैट टाइम आई वुड से इट विल बी लाइक पॉजिटिव ओनली। एंड 1,11,000 अगर ब्रेक होता है तो आई विल बी मोर बुलिश। एंड ऊपर में एज आई मेंशन्ड अर्लियर 1,16,000 के आसपास तक भी जाने के चांसेस है। दिस इज आई एम सेइंग अ ब्रॉडर पिक्चर, लाइक इफ इट गोज अबव 1,11,000 के लेवल्स अगर क्रॉस होते हैं, मे बी ये मंथ ना हो या फिर 1-2 मंथ, इट विल टेक टाइम, 2-3 महीना भी लगे, बट ब्रॉडली आई एम सेइंग आई विल बी ऑन अ पॉजिटिव साइड। Okay. Yeah, yeah. Okay. Uh, Going back to my mind maps. So that was with respect to the bullion commodities, gold and silver, and the fundamentals behind them. Going ahead to energy. So energy bolte I just wanted to say now, as we're discussing about energy, there's one major big development in the Indian energy market, particularly at MCX energy commodities. There is an introduction of electricity futures today, which have started trading today. And just please stay tuned as we discuss the fundamentals. Later on, we'll be discussing the contract specifications. We'll also check out how the volumes have been I'll be able to get easy entry exit. So primarily the contract specifications, कितना आपको funds लेके आना पड़ेगा. We'll discuss all those details. Just please stay tuned. Towards the end of this energy section, we'll be discussing about electricity futures as well. So the major development in the last 2 weeks with respect to energy commodities is that OPEC's higher production rise. So we have been seeing last few months, OPEC has been trying to increase the production output with respect to crude oil. But क्या रीजन था, बैकग्राउंड क्या था, टुवर्ड्स लेट 2023 the OPEC plus itself had brought down some voluntary cuts in the crude oil production, in the crude oil exports by 2.2 million barrels per day. So पहले ही OPEC plus around 2023 they had brought this cut, voluntary cuts of 2.2 million barrels per day. In order to cover that up, they have been increasing the outputs phase wise. मतलब every month they are increasing the oil output only with the view of getting more market share in this crude oil market. That is looking at the US shale output increasing at this time. They just wanted to gain more market share. That's why they've been trying to again bring back the production rise. So यहाँ पे हम देख सकते हैं in the month of April there was 1,38,000 barrel per day increment in the month of April. Then in May, June and July there was 4,11,000 barrels per day increment. But for the month of August they have signaled even higher, that is 5,48,000 barrels per day increased output in the crude oil output. So this has actually weighed down on the crude oil prices. That is a major development with respect to the energy commodities. So the reasons हमने देखा है primarily to gain market share against this rising US shale output. So, however, higher downward pressure on the crude oil prices is expected going ahead in the year 2026 as well. Because overall, the demand, even though there has been increased outputs by the OPEC plus countries, still there has not been enough demand which is which is trying to utilize all this increased output. So in general, demand भी कम होते आ रहा है. On the other hand, there has been increased outputs, and we have also been seeing easing geopolitical tensions as well. However, the Strait of Hormuz का ऊपर जो issue चल रहा था during this Iran-Israel war, तो उसका भी if since tensions have been easing down, तो वहाँ पे भी कोई इतना impact नहीं आने वाला है. That is what is expected. So since the geopolitical tensions fundamentals are also weighing down, on the other hand, OPEC is increasing the outputs. Demand is also not as much as expected. So these things have been in overall weighing down on the crude oil prices. So over to you, Anup. यहाँ पे अगर आप crude oil prices, price levels आप अगर दिखा सकते हैं तो. Yeah, just a second. Yes, crude oil prices, I think, yes, we see a volatile month last month, and this month it has been in a very tight range ahead of this OPEC, after that OPEC policy event, because they have already been in a place and they are
try to get the market share, so they have started to unwind their voluntary production cuts in August. Okay, that was in last previous occasions they have reduced it almost by 4,11,000, but in August, as Arvind has mentioned, it was 5,40,000 barrels. Okay, so ये जो उनका जो टोटल 2.2 मिलियन बैरल्स का था, उसका ऑलमोस्ट वो लोग 80% के आसपास दे हैव ऑलरेडी डन इट, रिकवर Correct. दे So हैव, यस, I think by August 1.92 million barrels so already cover हाँ, कर चुके होंगे out of यस that यस 2.2. सो अभी मार्केट में ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि इनका जो सितंबर का मीटिंग है, इन दैट आल्सो दे विल वहां पे भी they will increase the production. So those are all those factors being negative for prices. Only positive एक चीज है, यूएस में जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम हुआ है, एंड जो रिग काउंट्स है वो 2 साल के या 2 या 3 साल के, आई थिंक आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर द सितंबर 2022 या कुछ है, तब से लोएस्ट लेवल पे हुए हैं रिग काउंट्स यूएस में, कम हुए हैं. सो वो एक चीज है, यूएस में प्रोडक्शन थोड़ा कम हो रहा है. ओके, सो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर, थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है. बट अभी हम अगर देखेंगे लास्ट 2 टाइम के जो यूएस के क्रूड ऑयल इन्वेंटरी नंबर्स आ रहे हैं, वो बढ़ के आ रहे हैं. ओके, बिकॉज ऑफ दैट जो प्राइस में जो तेजी था वो तो कम हो गया, बट स्टिल आप देखेंगे तो $65 के लेवल्स जो है अभी भी होल्ड कर रहा है नाइमेक्स में, एंड इंटरनेट अपने यहाँ ऊपर के जो लेवल है $70, ये $5 का एक रेंज है, क्योंकि ऐसा मान रहे हैं कि अभी भी सप्लाई इश्यूज है, एंड मिडिल ईस्ट में थोड़े बहुत इश्यूज हैं, एंड जो रेबल्स थे हाउथी रेबल्स, दे हैव स्टार्टेड टू अगेन अटैक द शिप इन द रेड सी. सो उसकी वजह से हमने ये जो अभी लास्ट 3-4 दिन में थोड़ी बहुत प्राइसेस में रिकवरी देखी है. ओके, सप्लाई इश्यूज की वजह से ही हमने ये प्राइसेस में रिकवरी दी. ऑन द अगर और कुछ देखेंगे लाइक डिमांड सप्लाई कैसे और कुछ लाइक प्रोडक्शन या जो भी हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे तो देर इज नो मेजर इशू. सो मेरे हिसाब से अगर ये जो मिडिल ईस्ट वाला इशू थोड़ा बहुत कुछ दिन में अगर सेटल हो जाता है, अगर हाउथीज और जो इजरायली इन लोगों के बीच में फिर से पीस डील नेगोशिएशन या कुछ फिर से हो जाता है, एक्सटेंशन हो जाता है, या फिर इनका जो सीज फायर का, सो प्राइसेस में हम फिर से करेक्शन देखेंगे. ऑन द अदर हैंड फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू और कुछ पॉइंट्स अगर हम ऐड करना चाहें इसमें, तो जो ट्रेड डील्स को लेके सेम वे आई विल से, अगर कुछ पॉजिटिव आती है देन ओनली वी कैन सी सम रिकवरी. So broadly speaking, $70 to $65 will be the range. Yes, I would say $75, $70 के ऊपर I don't think so. Prices ऊपर में टिकेगा, and $70 जाएगा तो फिर से वहां से बिकवाली आ जाएगी. सेम वे एमसीएक्स में 6,000 का लेवल बोलूंगा, 6,000 या फिर आप मान के चलिए 6,000 40-50 के आसपास के लेवल्स ऊपर के लिए मेरे हिसाब से मेजर रेजिस्टेंस रहेगा. जब तक 6,050 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मेरे हिसाब से प्राइसेस में थोड़ी प्रेशर रहेगी. डाउन साइड के लिए बड़ा रेंज अगर बात करेंगे तो 5,500 या फिर 5,000, हाँ, नियर अराउंड 5,500 के आसपास. यू जस्ट कंसिडर दैट एज ए फॉर द टाइम बीइंग दैट इज ए क्रूशियल सपोर्ट. दिस इज द ब्रॉड रेंज फॉर क्रूड पॉइंट ऑफ व्यू. अगर छोटा रेंज का अगर बात करेंगे तो आप चाहे तो 5,750 से लेके 5,900 या 5,950 का रेंज, छोटा रेंज, जो कि 1-2 दिन के हिसाब से अगर कोई पूछ रहा है तो उनके हिसाब से ये ट्रेड रेंज रहेगा. Okay. Okay, that was about crude oil. And I think या natural gas में हमने recently बहुत ज़्यादा corrections देखा है, as high as 5% because of this cooler weather forecast. मतलब summer months का जो इतना heat expected heat because of the summer months इतना नहीं है, मतलब the expected weather forecast is a comparatively cooler weather. So because of that natural gas का जो demand भी कम हुआ है because of that prices coming down. Also, on the other hand, inventories may be annual average levels से भी 6.2% ज़्यादा inventory levels हमको देखने के लिए मिले. So these points have weighed down on the natural gas prices too much. So what do we look at the technical levels?
Yes, Arvind. I think natural gas, we know that it is a weather commodity and it is highly volatile. Because see, अगर आप पहले 2-3 हफ्ते पहले देखा रहेगा आपने तो प्राइसेस वेर हायर और रिकवरी भी अच्छी खासी आई थी एंड बिकॉज एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग यूएस में जो समर सीजन है इन दैट ज्यादा गर्मी रहेगा ये साल एंड द डिमांड फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी companies will be higher. That's why we saw a good rally in prices. But जो धीरे धीरे उनके वेदर फोरकास्ट में चेंजेस आ रहा है एंड दे आर एक्सपेक्टिंग नॉट दैट काइंड ऑफ हॉट समर ओके सो उसकी वजह से हमने लास्ट कुछ दिनों में अच्छा खासा करेक्शन देखा है लास्ट आई थिंक 2 वीक हो गया हमने करेक्शन देखा है इसमें और ये अभी देखा जाए तो ऑलमोस्ट एमसीएक्स में 270 के आसपास आ गया है ओके सो फ्रॉम हियर इफ यू आस्क मी मेरे हिसाब से 268 या 267 को जो लेवल्स है एमसीएक्स में अच्छा सपोर्ट है और ये लेवल्स अगर होल्ड होता है तो एक छोटा रिकवरी देखेंगे हम प्राइसेस में लाइक टिल 290 मान के चलिए या फिर 295 के आसपास हम ज्यादा से ज्यादा रिकवरी में बोल रहा हूँ ये एक एक 2 हफ्ते के आसपास आ सकता है मैं ऐसा आपको नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा तेजी हो गया बिकॉज प्राइसेस आप देखेंगे तो 350-60 से लेके एक बार एकदम से 275 या फिर 270 तक आ गया सो मे बी वी कैन सी सम शॉर्ट कवरिंग रैली फ्रॉम हियर एंड व्हाई आई एम सेइंग because most things are being discounted at current point of time and अभी एक्सपायरी को तो ऑलरेडी मेरे हिसाब से और लगभग 2 वीक्स है सो थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाकी ट्रेंड अभी भी मतलब बुलिश नहीं है ओके दूसरा चीज if you'll see from a inventory point of view, inventories are being increasing each and every week. Last week also we saw a good number of uh, like inventory जो built up हुआ है and और एक चीज है अगर रिग काउंट्स का अगर गैस रिग काउंट्स को अगर आप बात करेंगे तो यूएस में दैट इज स्टिल देयर उसमें जो 100 आई थिंक समथिंग अराउंड 105 या 109 के आसपास है दैट इज स्टिल देयर उसमें कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुआ है ओके सो और एक चीज जियोपॉलिटिकल इशू जो था वो तो ऑलमोस्ट वाइप आउट हो चुका है सो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी बहुत रिकवरी आएगी बट जब तक 300 के ऊपर नहीं चलेगा तब तक हम इसमें तेजी नहीं कर सकते Okay, understood. Okay, so that was about crude and natural gas contracts. And as I had said, electricity futures आज MCX में launch हो गए. From next week, we will be able to discuss on the price levels as well कि कैसे trade हुआ, what are the support resistance levels that we see, that we would see in the next 1 week. तो सब हम next week में discuss करेंगे. But for now, we will discuss what are the contract specifications, what is it that MCX had come out with. Um, so as I said, trading had actually started just today at MCX. So this is the MCX page, and I just would like to give a small disclaimer here. जो भी हम वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस यूज करके आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं सेशन में, none of these websites or applications are being promoted. This is only a purely educational webinar. So there is no promotional activity being done here. So for the educational purpose only, we are showing this MCX screen as well here. तो यहाँ पे MCX में अंडर दिस प्रोडक्ट सेगमेंट इन द टॉप मेनू आपको सारे लिस्ट ऑफ ऑल द कमोडिटीज दैट आर बीइंग ट्रेडेड MCX आपको दिखेगा वहाँ पे जाके आप प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं यहाँ पे यू कैन सी अंडर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन एडेड न्यूली एंड वहाँ पे इफ यू गो अहेड फॉर नाउ एज अ स्टार्टर अ फ्यूचर्स contract has been launched which will expire which the first contract will expire on the at the end of August. So these are the contract specifications. हम जब trade करते हैं electricity, we can see. So as they say, contracts available for trading are like available for all 12 calendar months in a year. But of course, you need to see the liquidity and take positions accordingly. The contract start day is first business day of the launch month. And then the last day of trading. This is very important for you to understand because it's not a
the equity markets, like last Thursday or last calendar month, ऐसा common नहीं रहता है in commodities market. As you all know or you may know, commodities में different contracts expire on different days of a month. Like for example, gold, silver, big contracts देखेंगे तो they expire on 5th of every month or once in 2 months. Smaller contracts usually expire on the last trading day. Crude oil usually expires in the mid-month around 17th, 18th, 19th. ऐसा. Natural gas expires after crude oil expires 5-6 days after the crude oil expiry. So different contracts expire on different days. Similarly, electricity ka bhi, the expiry is quite different. If you see, the business day immediately preceding the last calendar day of the expiry month. That is one day before the last trading day of the month. That is, for example, for this month, ठीक है, August का ही देख लेते हैं. The first the contract of electricity futures is expiring in the month of August. ये contract तो आपको, let's just change the screen. Yeah. So one day prior to the last trading day of the month. So for example, अगर आप जुलाई current month का देखेंगे, the last trading day or the last working day is 31st July. Normally, the small contracts at MCX usually expire and the base metal contracts expire on 31st. Electricity, for example, would expire one day before the last trading day. That is on 30th, it may expire. So on any given month, if the last trading day, whatever date is August का 29th या तो 28th को expire होगा electricity. September का 30th is the last trading day of the month. So 29th will be the expiry of electricity contract, electricity future. October का 31st is the last trading day. So 30th को expire होगा electricity future contract. So that is how the expiry happens. So on the contract day expiry, the contract will close at 12 p.m. So this is one more feature that is different from the other commodity contracts. On the day of expiry, the trading in the electricity future will be closed by 12 p.m. This electricity will basically be a cash settled contract similar to the other energy contract, which is crude oil and natural gas. Electricity future will also be a cash settled contract. And on the day of expiry, the trading will be closed at 12 p.m. and the contract will be settled by cash. And one more thing that you have to understand is all other commodities that are being traded, gold, silver, crude, natural gas, is a internationally traded commodities. Even electricity also is traded in international exchanges, but other commodities we derive the international prices. But the electricity futures that is being traded here in India at MCX is completely based on the Indian electricity spot market. So there is something called day ahead market, spot market, जहाँ पे next day का जो prices polling होता है, उसके prices के basis पे हम आज trade करते हैं, which is called the day ahead market. You can try to understand more about the day ahead market and the contract specifications or the Indian Energy Exchange site to understand this. So as usual, the trading days is Monday to Friday. Normal trading to hoga from 9 a.m. to 11:30 or 11:55 p.m. As is, and the price code basis is as per rupees per megawatt hour. So megawatt hour is the unit of this particular contract, and the price code will be given based on rupees per megawatt hour. And if you look at the trading unit, which is the lot size would be around 50 megawatt hour. So 50 megawatt hour is the lot size. And the maximum order size would be 50 times of the trading unit, and the tick size is rupees 1 per megawatt hour. Since tick size is rupees 1 per megawatt hour and the lot size is 50 megawatt hours, per tick, that is per rupee movement up or down, will give you 50 rupees profit or loss on this particular contract. So megawatt hour, for your understanding, मैं समझा देता हूँ. The electricity bills that you pay at your households or at your offices, वो units basis पे आपको मिलता है, correct? So per unit is nothing but 1 kilowatt hour. So 1 kilowatt hour is what is called as 1 unit of electricity that you pay. So जो prices हम देखते हैं, the electricity bills that we pay is usually based on slab rates. That is, first 100 or 150 or 200 units will be around 2.53 rupees. उसके बाद it will be 4-5 rupees. उसके बाद it might go as 10, 11, 12, 15 rupees as well. तो ऐसे different slab rates के ऊपर आपका per unit price रहता है. So but however यहाँ पे is not based on slab rates of course. तो यहाँ पे आपको rupees per megawatt hour मिलेगा. So per unit is nothing but per kilowatt hour, and megawatt hour is nothing but 1000 kilowatt hours.
That is 1,000 units is 1 megawatt hour. Okay, and the trading unit here is 50 megawatt hours. So just wanted to explain you keep just for you to have a relation based on the prices. So of course, so every month we regularly pay our electricity bills. हमको यहाँ से भी एक real life relation मिल जाएगा, connection मिल जाएगा to understand this electricity prices as well. So I'm just going ahead to look at how the trading has been happening. Just trying to look at the volumes here. So यहाँ पे MCX के साइड में ही just going ahead selecting the electricity future here particularly. So here you can see three different expiry dates. One is 29th August का expire हो रहा है, the 29th September का भी contract expire हो रहा है, 30th October का भी contract expire हो रहा है जहाँ पे आपको ON volume दिख रहा होगा. So there has been good traction, good ON volume in the August expiry contract. As high as 326 contracts are being traded at the moment. 1165 volume already दिख रहा है, and the LTP is 4,416 rupees what is being traded. So open हुआ था 4,105 rupees में and reached a high of 4,425 rupees. So currently it is trading at 4,416 rupees per megawatt hour. So this is the so approximately if you see the margins that you would have to bring would per lot would be approximately 25 to 27,000 rupees per lot of electricity futures at M6. So request you to please all go through, log into your respective broker accounts, search for the contracts, search for the electricity future contract, look at the margins required, funds required, and based on that, you can trade informed decisions, can take informed decisions and take your positions in the contract. And as we said, next week, next Thursday session we will also discuss the price levels of this electricity futures contract and help you understand more about the commodity contract. Well, going ahead with the base metals, you have completed energy here. Base metal supportive, ठीक है. यहाँ पे we have seen some tariff news coming up recently given by Trump. So Trump का ये Liberation Day policy, तो we all are aware. On 2nd of April, he talked about this Liberation Day where he wanted the US economy to become independent of the imports and all other economies charging tariffs on the US exports. So इसमें से US को free करने के in that point of view, he said that he brought up this Liberation Day policy, and he had discussed on this reciprocal tariffs to impose on the other major global economies. So उससे he had suggested around mid-July ये सब implement करने के लिए, but however it has been extended to 1st of August. For August 1st implement करने के लिए he had come out with some tariffs. That is, first thing, 50% tariff on all the copper imports. Then 50% tariff on the Brazilian goods, some 25 to 30% of additional tariffs over and above what is already existing on South Korean imports, Japan, Brunei, Moldova, Philippines, Algeria, Iraq, Libya, Sri Lanka, on such countries, 25 to 30%. Even on other countries also, he had come up with around 20 to 25% of tariffs, like on Indonesia, 32%, 30% of South Africa and Bosnia. So ऐसे multiple tariffs उन्होंने mention किया है. With respect to US India trade tariffs, there is no news as of now because there is some US India trade deal which is possibly going on, which is under discussions. And probably by late July, towards the end of the July, a mini trade deal would be signed, जिसमें particularly industrial goods and labor-intensive exports like textiles and leather. These will be involved in that particular trade deal, which would benefit both the countries without the requirement of this tariff scenario. And ये भी बोला जा रहा है कि they are aiming to double the bilateral trade deals between US and India, trying to double to as high as $500 billion by the year 2030. So basically, but still there are not much of information about this trade deal. But फिलहाल this mini trade deal is being discussed to be signed by late July. But of course, अगर कोई भी deal अगर finalize नहीं होगा,
before August 1, then we might also face reciprocal tariffs on us as well from US. Anyhow, we are about to look on that. But one major thing with respect to commodities we need to understand here is that this 50% tariffs on the copper imports particularly. So let's see how that will impact the copper price in the coming days. And over to you, Anu. अगर copper charts भी दिखा सकते हैं तो. Yes. See, copper हमने देखा है कि already तो they have like it was all earlier they have mentioning they were mentioning like 25% का जो ड्यूटी है वो लगाएंगे करके, but now it has come to 50. Okay, so that's why we saw in comics जो कि हमने 10-15% का रैली ऑलरेडी देख लिया है कॉमिक्स में, बट सेम वे एलएमई में आप देखेंगे तो कल 1% के आसपास या उसके ऊपर करेक्शन हुआ था, बिकॉज डेफिनेटली यूएस से डिमांड तो कम हो जाएगा, एंड जो एक तेजी का था व्यू, लाइक बाहर के कंट्रीज में जो कॉपर के डिमांड है वो कम हो जाएगी, बिकॉज लास्ट 4-5 महीने से मोस्टली एलएमई के जो कॉपर या जहां से भी कॉपर था सब यूएस को सब लाइक यूएस में जमा हो रहे थे. If you'll see from January to till date, LME कॉपर 2,65,000 के आसपास इतना जो उनका इन्वेंट्री था, दैट हैज कम डाउन टू नियर अराउंड 1 लाख के आसपास. इवन लास्ट वीक आपने देखा रहेगा तो इट वाज नियर अराउंड 92,000 ओके टन्स के आसपास था. सिमिलरली सेम जो 1,65,000 के जो आसपास इन्वेंट्री कम हुआ है वो यूएस में कॉमेक्स में जाके 2 लाख के आसपास समथिंग नियर अराउंड 2 लाख या उसके ऊपर इन्वेंट्री कॉमेक्स में जमा हो गए हैं. ओके, सो इट इज एन प्रीएम्प्ट जो यूएस के इंडस्ट्रियल यूज के लिए मेटल्स को जो है दे हैव स्टोर्ड इट फॉर फॉर सम टाइम. सो उसकी वजह से ही हमने देखा कि प्राइसेस में जो डिफरेंसेस है, मेरे हिसाब से जो मूवमेंट या जो आना था फॉर द टाइम बिंग एक हो गया है. और जो तेजी का एक था पॉइंट ऑफ रैली हुई थी सब मेटल्स में, खास करके कॉपर में, मेरे हिसाब से अभी थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा. एंड अगर एलएमई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे तो नियर अराउंड 9,400 या $500 के आसपास है, उसको मेजर सपोर्ट है. 9,400 आप पकड़ लीजिए और ऊपर के लेवल 9,900 या फिर $10,000, ये जो ऊपर के लेवल है ये मेरे हिसाब से मेजर रेजिस्टेंस रहेंगे. थोड़ा टाइम के लिए ये भी कंसोलिडेशन फेज में आएगा. और डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो आई वुड से 870, ओके 870 के आसपास एमसीएक्स कॉपर को सपोर्ट रहेगा. और ऊपर में सेम 905 या फिर आप मान के चले 900 या 905 के आसपास एमसीएक्स में रेजिस्टेंस रहेगा कॉपर के. Okay. Okay. So, can we also take up aluminum charts as well? Yes, उससे पहले आई वुड जस्ट वांट टू ऐड समथिंग. अभी देखिए व्हाट इज राइट नाउ फ्रॉम चाइनीज पर्सपेक्टिव, अगर डिमांड सप्लाई का बात करेंगे, सो चाइना के जो कॉपर इंपोर्ट प्रीमियम थे वो भी कम हो गए थे. ओके, लाइक लास्ट 2-3 महीने में इट वाज हायर नियर अराउंड 80-84 लेवल्स जो कॉपर प्रीमियम से, दैट हैज बीन कम डाउन टुवर्ड्स 30 लेवल्स. तो चाइना की तरफ से जो जो भी डिमांड था वो भी थोड़ा कम हुआ था, बिकॉज प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, सो दे आर नॉट विलिंग टू बाय एट करंट लेवल्स. उसी की वजह से भी करेक्शन है. दूसरा चीज, चाइना में जो अभी जो रिसेंट इन्फ्लेशन नंबर आए थे, जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लेशन नंबर से, यानी जो आप होलसेल प्राइस इंडेक्स भी बोल सकते हो, उसमें भी कंटिन्यूअसली डी ग्रोथ है. ओके, सो डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से उतना है नहीं, दैट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चाइना. अगर हम सिर्फ डेटा पॉइंट के हिसाब से बात करेंगे, इफ यू सी राइट नाउ कॉमेक्स कॉपर और एलएमई कॉपर में नियर अराउंड 2,600 ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट, उतना प्रीमियम अभी भी है. लाइक एलएम कॉमेक्स कॉपर इज दैट प्रीमियम टू एलएमई. ओके, सो प्राइस डिफरेंस है, सो आर्बिट्रेज का भी अपॉर्चुनिटी रहेगा. एंड ये कुछ टाइम लगेगा टू सेटल आउट. ओके, सो बिकॉज ऑफ टैरिफ्स
ये धीरे धीरे सेटल होगा एंड प्राइस का जो मूवमेंट है, वो जो तेजी है वो नहीं रहेगा, इट विल ऑटोमेटिकली कूल डाउन इन सम डेज। और एक चीज, इफ यू विल मॉनिटर एलएमई कैश और एलएमई 3 मंथ फॉरवर्ड, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये दोनों में भी स्प्रेड बढ़ गया था, बट ये धीरे धीरे कूल ऑफ होता हो रहा है। लाइक जो स्प्रेड है, अभी क्या हो रहा था, फिजिकल टाइटनेस था, उसकी वजह से जो कैश मार्केट था प्रीमियम चल रहा था फॉरवर्ड मार्केट से। ओके, सो इट वाज समथिंग अराउंड 260 $265 के आसपास हो गया था। नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड, और मेरे हिसाब से ये जो स्प्रेड है और कम होता जाएगा आने वाले दिनों में। एंड कॉपर में इन्वेंट्री, एलएमई में जो इन्वेंट्री है, वो फिर बढ़ना चालू हो जाएगा। आप देखेंगे तो लास्ट एक वीक में 92 या 93,000 के आसपास एलएमई में कॉपर इन्वेंट्री था। अभी आप देखेंगे तो 1,10,000 के आसपास हो गया है। सो आई वुड से कि शॉर्ट टर्म के लिए एक करेक्शन भी आप मान के चल सकते हो कॉपर के लिए। एक बार एल्यूमिनियम की तरफ देखते हैं, हाउ इट हैज बीन। एल्यूमिनियम में भी कुछ सप्लाई इश्यूज था, एंड उसकी जो रॉ मटेरियल का उसका सप्लाई था, उसकी वजह से प्राइसेस में हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी है। नियर अराउंड 250 के आसपास है एमसीएक्स के लेवल्स अगर देखेंगे तो। यस, 249.65 के आसपास है। मेरे हिसाब से ये भी रिकवरी फेज पे है। लाइक 244 245 ये सब सपोर्ट्स लेवल रहेंगे। एंड ऊपर में अगर ये 252 क्रॉस होता है तो 255 तक का लेवल हो सकता है। तो मैं इसमें ज्यादा वीकनेस नहीं बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग साइडवेज टू पॉजिटिव आप मान सकते हैं। till 244 245 level holds, I am expecting again recovery towards 254 या 255 levels. Okay. So that was about base metals. And I think Going, Arvind will yeah. look for zinc also, how zinc is Sure, been. sure, sure, sure. Yeah, zinc देखिए 260 का लेवल फिर से आज आ गया है। ओके, बट Yeah, एक बार 262 स्क्रीनशॉट कर दीजिए। मैंने हाँ, ओके, yeah, जस्ट yeah, it's coming up. यस यस। जिंक एमसीएक्स जिंक देखिए 262 मेरे हिसाब से इमीडिएट रेजिस्टेंस है। वंस इट विल मूव अबाउट 262, हम अच्छा खासा फिर से रैली देखेंगे। बट शॉर्ट टर्म के लिए 262 ही आई थिंक टारगेट होना चाहिए। एंड ब्रॉड रेंज इफ यू आस्क 254 टू 262 विल बी द रेंज। अबाउट 262 आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन 266, या फिर आप मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा 270 के आसपास एक बार आ सकता है। Noted. So that was about zinc as well. Okay, thank you. Going ahead, हमको price levels also, the current price trends also we have been discussing simultaneously against different commodities. But उसके अलावा I just wanted to show this one more report, which is the weekly report as well, that Anup had also worked on. So यहाँ पे particularly आपको price levels, the pivot levels for this particular week, uh, like LTPs, the S2, S1 pivot, R1, R2 levels ये सब मिल जाएंगे. So यहाँ पे fundamentals and technicals both are discussed for this particular week as well, which had come out on Monday. You can go ahead and check up these particular research report. इसका भी link नीचे description में दिया होगा. I request you to please go ahead and check out the report. So going ahead, forecast for the next week, क्या क्या और आगे के लिए देखना चाहिए? What are the points that we need to have heads up for? So the 50% tariffs on copper that we had discussed, expected to be implemented on 1st of August. But of course, तब तक हमारा और दो और सेशंस भी आ जाएंगे, 2-3 सेशंस भी आ जाएंगे. We'll discuss about these further. And the next week, and as Anup had mentioned previously, US inflation numbers will be getting, which will have a major impact and a major point that supports the Fed's decision as well, the USD prices, the dollar price levels as well, and indirectly the gold silver price levels as well. And then there's Fed meet on 30th June. But as Anup said again, there is not expected rate cut in this
meeting. Almost more than 90% expectation is that there will be no rate cut. But however, we'll have two more sessions in the coming weeks. If there is any change in the stance, we'll let you know. And the OPEC Plus's reassessment of this August supply hike of 548,000 barrels per day. They be देख लेंगे by August. This is what will get implemented. However, in the month of August, if there is any reassessment or expectation for the next month's rise, that will also be discussed and we'll go ahead on that. So other than that, the important data points that we are going to see, this is the economic calendar that I usually discuss every time, which is on the investing.com site. Again, this site is not being promoted, just here to explain you, just show you what are the major impacts, major impacting events. So these are all 3-star events, which is nothing but the important events that we discussed. So आज के अगर events देखेंगे, morning there had been German CPI numbers, and then at 6 o'clock there will be US initial jobless claims, and again another important data point which will impact the US dollar levels and indirectly the commodity market as well. And tomorrow we'll be seeing GDP numbers from UK. This is what is in the next 2 days. And if you look at the next week data points, there is India's inflation numbers coming up on Monday and the CPI numbers, WPI inflation and the CPI, which is for Monday. Tuesday ke din China's GDP numbers and India's trade balance numbers, and then USD se aapko core CPI, which is the inflation numbers that we have been looking up for. On Wednesday, there will be inflation numbers from UK as well, coming Wednesday, and then PPI information from USD. So these are some important data points that will come up in the next week before we come up with the 24th session of this series. So ये आपको एक heads up रहना पड़ेगा to run through these data numbers, these data points. And finally, as we discuss in every session, there is this key economic indicators data that a PDF that we have. जो भी ये जो data points हम investing.com में देख रहे थे. So for you to understand what this CPI, what is this WPI numbers, ये कैसे prices impact करते हैं on the commodities market, when are these released usually? So all these things we are covered in this particular PDF. आपको नीचे description में इसका भी link दिया हुआ है. You can go ahead and understand what these are. So there's something like this. So basically the US indicators, which is the like major points like the consumer confidence index, the CPI, the inflation numbers bolte hai, consumer price index bolte hai. What is this? So you can understand from here what it is. It is an index tracking the prices of everyday goods and services, showing the rate of inflation in general. So that is what it means, CPI. And why does it matter? Because it helps determine how much the cost of living is rising. So obviously, when the everyday goods and services prices is rising, that will determine that the cost of living is increasing and is impacting is living is rising and impacting wages and savings. Correct. And then how to read this? A rising CPI means that is a rising cost of living means a higher inflation. Correct. And then which can lead to increased commodity prices as well, especially for essentials like oil and food. So that is how the CPI is read and how it impacts the commodity prices. And when is it released? It is usually released monthly around the middle of the month. So this is how CPI is understood. Similarly, then there is other lot of other data points like this, like the employment situation, GDP, home sales, and multiple such the jobless claims, initial jobless claims. You'll be able to understand what all these data points mean. So the first section we see US indicators, and there are India specific indicators as well. The Indian PPI, the industrial production, CPI, India's trade deficit, India's GDP, India's foreign exchange reserves. Foreign exchange reserves, so every week, every Friday we get to they get to release by India. And then there are energy specific data points as well, metal specific points as well. So I request you all to kindly go through this PDF as well, which will help you to understand the different data points released by different economies, different countries. So that is majorly all the points that I wanted to cover for today, that we wanted to cover for today. I hope we have been answering all your questions in the chat box below. We would have taken up all possible questions in the chat below. Is there anything that you would like to add up to this session, Anu, before we close it?
No, I don't think. I think we have covered most of the things. But yes, this week we don't have any major, like today or tomorrow, we don't have any major events. So most next week's US inflation numbers will be crucial, and all the trade, you know, news on related to trade and all that, like trade deals and all that, that will be crucial. So those are the things that just have to focus. Uh, yeah, that's it Yeah. for from my side. Yeah. Yeah. Well, so that's all, viewers. Thank you all for attending the session till the end. We'll come up with the 24 session on the next coming Thursday as well. Until then, keep going ahead. Keep understanding all these news till the next 1 week, on the next 1 week. Until then, happy trading. Thank you. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.